वेलकम टू सिविल एस्पायरेंट। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। सो द फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर आर्टिकल 12 to 35 एंड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया was the first Magna Carta was the first written document relating to the fundamental rights of the citizen, and that is why this Magna Carta of that is why these fundamental rights are called as the Magna Carta of India. Okay, and fundamental rights को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द chairman of the drafting committee. He termed these fundamental rights as the most discussed part. Then fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy. जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो आइडिया है उसको प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी फॉर्म द philosophical part of the constitution, right? And fundamental rights are justiciable in nature. क्यों justiciable है? क्योंकि in case of violation of the fundamental rights one can directly move to the Supreme Court, which means that they are enforceable by the court for their violation. That is why they are called justiciable in nature. Then the fundamental rights, the idea of the fundamental rights was taken from the Constitution of USA. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था? वो यूएसए से लिया गया था। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया था। एंड ओरिजिनली वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स. The rights to equality comes under article 14 to 18. Then right to freedom, which comes under article 19 to 22. Then right against exploitation comes under article 22 and 24. Then article 25 to 28 mention the right to freedom of religion. 29 and 30 mention about the cultural and educational rights of the citizen. Then the right to property, which came under Article 31, was abolished by 44th Constitutional Amendment Act 1978, and it made a legal right under Article 300A and Part 12 of the Indian Constitution. So it was made as a legal right which comes under Article 300A and Part 12 of the Indian Constitution. Okay, this is important for exam purpose. Then the last one is the right to constitutional remedies, comes under Article 32, and it is the most important article of the Indian Constitution by बी आर अम्बेडकर. ओके, बी आर अम्बेडकर इसको ये जो आर्टिकल है इसको बी आर अम्बेडकर बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. Then we are going to discuss some of the features of the fundamental rights. The first one is they are not absolute but qualified. एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी. सो द सेकंड वन इज द जस्टिसेबल इन नेचर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई दिस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल. एंड देन थर्ड वन इज द डिफेंडेड और गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. सो जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करते हैं और गारंटी देते हैं कि कोई भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स हनन ना हो, इसकी ये गारंटी देते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट इन नेचर. ये सेक्रोसेंट यानी कि परमानेंट नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स वायलेट भी हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. सो आर्टिकल 20 और 21 को वायलेट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी. And one more important point here is that the fundamental rights comes under Article 19 can only be suspended during external emergency, not in case of internal emergency or armed rebellion. Okay. Then the next one is the fundamental rights can be restricted or abrogated to armed forces, police forces, paramilitary forces, intelligence agencies and analogous services by the parliament. Okay. So parliament की पास ये पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो इसको फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. किसका फंडामेंटल राइट्स? आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनालॉगस सर्विस के. ठीक है,
तो the next one is the some of them are available to citizens only. okay, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल है जो ओनली फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर दी फॉरेनर्स और एनी लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशन. ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल 5 फंडामेंटल राइट्स है, आप लोग याद कीजिए ये फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, 15, देन आर्टिकल 16, then article 19, then article 29, okay, then article 29, then article 30. okay, so these 5 fundamental rights are only for citizens, not for the foreigners. Then the application can be restricted while martial law is in force, right? So here the concept of martial law came out. So martial law, कोई भी अगर एक एरिया में अगर मार्शियल लॉ अप्लाई हो रहा है तो वहाँ की जो सिटीजन्स है उसकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो सकती है. ठीक है, तो ये आर्टिकल 34 में मेंशन किया गया है. सो ये हम लोगों ने अभी पार्ट 1 डिस्कस किए हैं फंडामेंटल राइट्स की. पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आप लोगों के पास आने वाला हूँ. और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. हैव ए नाइस डे.